Good morning, all of you. Today we'll discuss about the access specifier because access specifier plays a vital role. Different category like any returns, like different to packages. In earlier lecture, we discussed about the packages. So we did the program in that we created one class inside one package, and that will be executed that program on another package. In some odd cases, if we did not provide a public access specifier in one package, that package program will execute it in another program, another package. So in that case, there will be a error, it will be generated. So for that reason, we need to understand what are the kinds of access specifiers are available in Java and how we'll do that. We all know that in C++ we have three access specifier: public, private, and protected. Public is used for a universal access, whereas protected is used for the inheritance, and private is used for only that particular class. That means inside that class, without that particular class, we cannot able to access that data member of that particular class. Okay, so simply we can say that in Java, access specify allows us access or restrict the access by using an access specifier. Okay, so in order to use the data from one package to another package, so or within the package, we have to use the concept of access specifier. In Java, we have four types of access specifier. First will be the private, second one will be the default. Default is not keyword. Third will be the protected, and fourth will be the public. So these four access specifier we are using in the Java. See, access specifier makes us to understand the access the data within the package. Okay, like in Linux we have the concept of permission. Like in the Linux we have the concept of setFSL, getFSL, that means special permission. With the help of that permission and special permissions, admin can restrict the user to access the data, or admin can allow the access to the data inside that folder. Folder is nothing but package inside the data folder. Okay, so similarly in Java, अगर ऐसा लगता है आपको while defining a class, no one can access my data member, only my derived class will access my data member, or anyone can access my data numbers. Okay, like that stuff, if you want, then we will use the concept of access specifier. So here I wrote the statement in red line: class to class, interface to interface, and interface to interface to class, and across the package. Okay. So like data within a package and across the package. Within a package means class to class, interface to interface, or interface to class. And across the package means class to class, interface to interface, and interface to class. So assume that there will be a package over there. Inside that, assume that, just I will explain by using a diagram. So assume that this one is a package available. Inside that package I have created a certain classes. This one is a class, this one is another abstract class, then this one is an interface. The communication in between the same package. Okay, here I am trying to communicate this class with abstract class and abstract class with interface, like that stuff, or interface with abstract class. The communication within a package, or the communication across the package. So another package is there, inside the class are there, abstract class are there, or interface is there. Communication between one class to another class, communication between one interface to another interface, communication between one interface to another interface, communication between one class to another class, within the package, outside the package. Okay, so for that reason, we require a concept of access space. और ये आपको पता होना चाहिए. So once you know that, then you can able to write a code. Okay, ऐसा कोड नहीं करना है हमें that will be not executed. वो ऐसा कोड करना नहीं है कि वो कोड ही execute ना हो. So in that case, we need to understand the concept of package. Okay, so in that this one is a class. That this one is an abstract class. Okay, that this one is an interface.
A class abstract class एक्सप्लेनेशन के अंदर यही बताया मैं access specifier to access the data within the package. That means same package here, pack one, communication between class to class, communication between interface to interface, communication between class to interface within the package and outside the package. For that we require a access specifier. In other words, access specifier represent the visibility of data or accessibility of data. So अगर एक्सेस स्पेसिफायर आप अच्छे से लिखते हो ना, so that it will tells compiler who can access your data. Okay, so if you are using a protected, then only data class will be accessible the data. If you are using the private, then only base class will access the data. If you are using the default, then within a package we can access the data. If you are using a public, then within a package and outside package we can access the data. So syntax to declaring a variable along with the access specifier. How we declare the access specifier? Just we need to use the access specifier. Later on, we need to use a static variable, final data type one. Even we did not use the static. Okay, if you don't want to use static, we cannot able to use. If you don't want to use final, we cannot able to use. So this one is a not compulsory. Okay. So access specifier, it is not mandatory. In earlier program we did not write any access specifier. Okay. So in that case, default access specifier will be activated. Okay, इसके बारे में इसके पहले हमने जो भी प्रोग्राम किए in that case we did not specify any access specifier, so that case default access specifier will be there, not public. Make a note of that. In C++ when we write any code without access specifier, then it will be treated as a private, then it will be treated as a private in C++. But in Java, we did not specify any access specifier. It will be treated as a default access specifier, and there are some rules and regulation of default access specifier is there. So by using that, we can declare the access specifier. For example, see public access specifier how will define. So here public static final int a is equals to 10. Here I am using a public key one. Okay, so that means the access specifier will be public. Now this variable be accessible within a class, outside the class, independent class, within a package, outside the package, and in derived class. So public is also called as a universal access specifier that will be accessible in anywhere. Okay, so ये diagram के हिसाब से आप within class भी कर सकते हो, within package भी कर सकते हो, and outside package भी कर सकते हो. Okay, protected, here how will declare the protector. So we need to use a keyword called as a protected. So when we declare any variable with a protected access specifier, in that case that variable will accessible only in derived class. Make a note of that. That variable will be accessible only in derived class. Okay, so we can access that in same package, and we can access in other package also. We have some rules and regulation. I will specify that while doing the one program. एक program करके मैं आपको दिखाऊंगा भी कि how will do that, how will access that access space. But make a note of that, whenever you use a protected access specifier, that will be accessible only within a derived class. Okay, derived class में ही access हो सकता है, but that will be accessed within a package and outside package. So वो within package में भी access हो सकता है and outside package में भी हो सकता है, but make a note, it will be accessible only derived class. That means assume that in pack 1 I have defined one class having name base, and in pack 2 I define another class having name derived. So in other pack 2, when we define the class derived, we need to extend the property of base class. In that case, only we can access the variable. Without inheritance, we cannot able to access the variable outside the package. So outside package के लिए ये variable access नहीं होता. Third one is the int x. Here I did not use any access specifier. Make a note of that. Earlier हम जो program करते हैं ना, वैसे मैंने यहाँ कुछ भी mention नहीं किया. It means that system will use default package. And there are some rules of default package. That means default package will be executed in the same class. Default package will be executed in the derived class within a package.
Default package will be executed in independent class within a package, but default package cannot be executed on other package. So default कभी भी other package में execute नहीं होता है. It has some restrictions. Make a note of that. And the last one is a private. So private, we all know that whenever we declare the variable, how do you know about the private access specifier? How many among that know about private access specifier? Thus, you can able to write a code for private access specifier in C language. C language में से ही बता सकते हो आप. There is a concept of encapsulation. There is a concept of data abstraction. दोनों concepts private access specifier को ही important होते हैं. So किसी को पता है how will write a private access specifier code and what purpose we are using that? If yes, let me know. If no, then also let me know quickly. That I am audible? No, Pratik said no. So just I will illustrate that. How will you use that private access specifier? Class, test. I will write a code over there. So see how the private will be executed. Stored in a D drive, Java. I will define private. Right. So means see, in that case, this private will accessible within this class. We cannot able to access outside the word. हम outside word में private access specifier नहीं use कर सकते. Make a note of that. That's why the data member will always the private and member function always be public. Here I'm not using any access specifier. Then it will treat default access specifier. Treat default access specifier. Okay. Default access specifier. Now I will execute it. I have access. I can access this variable within this class. And within this class, I can able to access this. Okay. This I will show you in another different way. So you have a better idea. Here I will use this priority. क्लास का नाम है आपका. So that void main bracket string of JSON. Said that I will create an object of this class. Make a note of that this class contains the private variable. So if I trying to use this private variable, if I trying to use this private variable inside my this class test priority, it will not accessible. But this one is a default package, or here I will use a public access specifier. Now I have an access. I have I can access this sum method because the access specifier will be public, but some method can access this private variable. Why? Because this private variable declare inside this class. So some method A or B को access कर सकती है. What is the reason behind that? Because the sum method have access these two variables. So private variable क्या होते हैं कि private variable will be accessible within a class. So here I will create an object.
इस पर्पज से प्राइवेट वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं। प्रोग्राम का नाम वही होना चाहिए जो क्लास का है, जिसके अंदर मेन मेथड है टेस्ट PRI, टेस्ट PRI, that method contains a main method. Okay, here we have another class that contains the private data member. Java, Java C. The name of program would be test PRI. Program will be compiled and now we can so थोड़ा सा चेंज करते हैं. Here I will not declare this. Directly we will perform the operation. So here I will when I compile this, straight it will be executed. Just 1 minute. I will do that. See, compiled. Now I'm able to execute that. Test. Still it will get the same result. Still it will get the same result. 10 plus 10, we get the 20. Okay. Now इसके अंदर अभी मैं यहाँ access करने की कोशिश करता हूँ. I don't want to just मैंने method तो execute कर ली, but just I want to print the value of A and B also in another class. See here we get the error. What? We cannot able to access the private data. Not able to access the private val of value. See, I'm trying to access the. Okay, यहाँ मुझे permission नहीं. If it is a public, then I have a permission. Okay, but if it is a private, then that private data member will be accessible within a class. So इस class के अंदर ही वो access हो सकते हैं. तो standard rule यही कहता है कि आपके data members वो private होनी चाहिए और member function आपकी public होनी चाहिए. So when I try to compile this, we get the error. See, here we get the error. Line number 17 error has a private access specifier in test PRI 123, so we cannot able to access this. So ये हमें access करने की permission है. But if it is a public, then we have access. बहुत ही अच्छा concept है ये. Git compile java test underscore PRI. We get the value of A also. We get the value of A also. Okay, so this is about the private access space. So here the private access space. Okay. So similarly, see, if we didn't want to provide any access specifier, in that it will be treated as a default. If we are not using any access specifier, it is by default treated as default access specifier. These are the 4 access specifier where we can use in our Java code. Okay. So did you get that program? इसमें थोड़ा सा चेंज किया है मैंने. अर्लियर इट वाज अ प्राइवेट, तो फिर पब्लिक किया तो ही मुझे एक्सेसिबल मिलेगा. इफ इट इज अ प्राइवेट, अगर ये प्राइवेट है, देन आई एम नॉट एबल टू एक्सेस इट. ओके, सो लाइक दैट यू नीड टू डू द प्रोग्राम्स. आपको ऐसे ही प्रोग्राम्स परफॉर्म करने पड़ेंगे एंड यू नीड टू बिल्ड योर लॉजिक्स.
See, I have a diagram. So here I have two different package, same package and other package. ओके मैं थोड़ा सा ना थिंग से डिफरेंट काइंड से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकते हैं आपके वेरिएबल और कहाँ नहीं हो सकते. Okay, so assume that this one is the same package and this one is the other package. In same package, we have three different classes, first, second, and third. Okay, so in that I have declared a variable private n, int en, private access specifier. यहाँ access specifier नहीं है, that means it will be treated as a default, and this will be access specifier will be protected, and this will be the variable public access specifier. Here I am declaring the variables n underscore pri, n underscore pri, n underscore default, okay, n underscore protected, n underscore public. Okay. Assume that you have created one class in same package. You have created one class in same package. Inside that package, you declare these four variables. Inside that package, you declare these four variables. Now, I will access this by using inheritance. I can access by using inheritance. Inheritance के अंदर कभी भी याद रखना आपको is a relationship. Is a relationship. That means assume that this class is a base class and this class is a derived class within same package. सेम पैकेज के अंदर बेस क्लास भी है डिराइव्ड क्लास के. अगर ऐसा केस है तो प्राइवेट वेरिएबल नॉट एक्सेसिबल, प्राइवेट वेरिएबल ओनली एक्सेसिबल विद इन अ क्लास. बट व्हाट अबाउट द डिफॉल्ट, डिफॉल्ट विल बी एक्सेसिबल. यहाँ से बोल लिया डिफॉल्ट विल बी एक्सेसिबल इन इनहेरिटेंस because here I am using the is relationship. Here I am using the is relationship. Okay. Protected also accessible in inheritance. Protected भी यहाँ accessible है. Okay. And public has the universal access. तो public भी यहाँ accessible है. So what about this? This one is a base class. This one is a derived class. What about third class? Third is an independent class. That means we are not inheriting the property of base class into the derived class. यहाँ third class में property inherit नहीं कर रहा हूँ. Just what should I do? I will import this class into this. Okay, we already know about the package. Package के अंदर कैसे करते हैं? Import class. Import class dot asterisk sign semicolon. Import package dot class dot or package dot star asterisk sign or semicolon. So in that case, that means this class is not a inherited class. That means independent class. और independent class में has a relationship होता है. याद रखना है आपको कि इनहेरिटेंस में इज रिलेशनशिप होता है एंड इंडिपेंडेंट में हैज रिलेशनशिप होता है. आई विल शो यू, डोंट वरी. मैं आपको एक प्रोग्राम बना के भी दिखाऊंगा. सो दिस इज अबाउट इन सेम पैकेज. अगर सेम पैकेज में है तो प्राइवेट विल नॉट एक्सेस, डिफॉल्ट विल बी एक्सेसिबल, प्रोटेक्टेड विल बी एक्सेसिबल एंड पब्लिक विल बी एक्सेसिबल. ये तीनों के तीनों यहाँ एक्सेसिबल हो सकते हैं. When we talk about other package में अगर inheritance है, is relationship है, this one is a base class and this one is a derived class. So in that case, private is not accessible. Private तो only एक ही class में accessible हो सकता है. Other class में private accessible ही नहीं हो सकता. Okay, so default will be not accessible. See, default will be executed only in same package. Default will be executed in same package. So यहाँ default भी नहीं होगा. Only protected होगा और only public होगा. Okay, in is relationship. अगर has a relationship है, so this one is a one class and this one is what we say independent class. So in that case only public will be executed, protected भी execute नहीं होगा. याद रखना है. So यहाँ illustration दिया है इसका मैंने. See, same package base class, same package base class, same package derived class, same package derived class, same package independent class, same package independent class, other package derived class, other package derived class, other package independent class, other package independent class. So इससे ना आपके concept पूरे clear हो जाएंगे access specifier के. See, we have four access specifier: private, default, protected, public. So same package में private will be accessible. Same package derived class में private will not executed. Same package independent class में private not executed. Other package derived class में private not executed. Other package independent class में private not. मतलब private कहाँ use हो सकता है? It will be executed on only base class.
इसके अंदर अपने डिफाइन किया है और अपने हम अभी प्रोग्राम भी किया है उसका. Second, what about default? Default will be executed in same base class, yes. In other derived class, same package derived class, yes. Same package independent class, yes. But other package derived class, no. Other package independent class, no. Protected, same package base class, yes. Same package derived class, yes. Same package independent class, yes. Other package derived class, yes. But other package independent class not allowed. Public will be accessible for all. Okay. So note, private access specifier also known as a native access specifier. These are the alternative names. Okay, ये याद रखना है आपको इंटरव्यू के लिए. So private access specifier also called as a native access specifier. Default access specifier also called as a package access specifier. Protected is also called as inheritance access specifier, and public will also called as a universal access specifier. Okay, these are the variables. Do one program. ट्राई कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम बनाने के. Okay, I will write the program names having name 3 times a. Here I will use class same package base class. Same package base class. That I am declaring the variables. What we say, an underscore private. An underscore protected. An underscore default def. N underscore public. ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं. Here I declare this in a class. अब ये ओनली डिक्लेयर किए तो ये प्राइवेट हो गया क्या? नहीं, इसका एक्सेस स्पेसिफायर भी आपको लिखना है. राइट. एक्सेस स्पेसिफायर, दिस वन इज प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, दिस वन इज अ डिफॉल्ट. डिफॉल्ट को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. Now हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए. जस्ट वेरिएबल, आई वांट टू डिक्लेयर द वेरिएबल. ओके, दैट्स इट. So now what should I do? I will show this by using a constructor. Constructor एक लेते हैं. I will print that information. अब यार मैंने कंस्ट्रक्टर क्यों लिया? मुझे मेथड्स कॉल करते बैठना नहीं है. Automatically that method will be executed once I created the object. System dot out dot. First will be the private, so here I will write private underscore just will pass the word PRO. The default, so माझ्याकडे रेडीमेड प्रोग्राम पण है, बट आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं खुद से बनाने की कोशिश. लास्ट वन इज एक एक को परफॉर्म करेंगे साइमल्टेनियसली, सभी तो परफॉर्म नहीं हो सकते.
मैं उसे मेन मेथड लिख 'I will create an object of that class. Object create करता हूँ और ये constructor we all know that there is no need to call this method. ये method call करने की जरूरत नहीं. So just try to execute that program. Java C, the program same package. That we get that values. See, we get that values. अब diagram में आते हैं. Is that same package base class can able to execute private? Yes. Can able to execute default? Yes. Can able to execute protected? Yes. Can able to execute public? Yes. मतलब ये पांच चारों yes है और we get the output like this also. ये yes भी मिला. Now we need to use same package derived class concept. इसे derived create करना है. Derived create करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? Here we need to remove this method. Okay. Create सेम पैकेज क्यों है? क्योंकि ये अंदर ही है, उसके अंदर चालू है, पूरा का पूरा सेम पैकेज के अंदर ही चालू है. So here I will write class, I will write same package derived class. At that I will create object. I will extend the property same package base class. Derived class ऐसे ही होता है ना. So that's it. ये यहाँ से मैं access करूँगा. Now I will execute this method. Earlier we executed same package base class. Now we need to execute same package derived class. On the terminal. Now trying to copy Java same package derived class dot Java. We get the error. See error. Class interval record expected class spell mistake is there. भी रन हो गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay, so just here also we need to remove because private accessible will be private data member will accessible within that class. What should we do? Change the name. So change same package. क्या किया मैंने? Just here I wrote the four variables. उन वेरिएबल को मैं इस क्लास में एक्सेस कर रहा हूँ. Here I am extending the property. So extend कर रहा हूँ that means I am inheriting the property. Okay, उसकी property inherit कर रहा हूँ मतलब जितने भी variables that I declare inside the SPBC same package base class so that will be accessible. But अब access specifier के हिसाब से accessible है. I wrote SPDC same package derived class. Done. Here also I created an object of SPDC. That's the same package. See, only we get one error. Private access in SPBC. ये accessible नहीं है. Okay, ये accessible नहीं है. So what should I do? Here I will use comment.
private will be executed. Private 10 protected. ये आउटपुट किसका है? बेस क्लास का है. I already told that in the constructor default constructor will be automatically called. So यहाँ ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ सेव करना पड़ेगा अर्लियर जावा सी सेम पैकेज बेस क्लास डॉट जावा, क्योंकि उसके अंदर हमने चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं किए, तो इसकी वजह से ओल्डर क्लास फाइल के अंदर से प्रोग्राम रन हुआ था. सेम पैकेज अब ये ठीक हो पैकेज गेट जावा सी सेम पैकेज क्लास डॉट जावा सेम पैकेज क्लास सी प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट एंड पब्लिक. प्राइवेट तो एक्सेसिबल नहीं है ना, प्राइवेट एक्सेसिबल हो सकता है क्या? नहीं. सी आउटपुट देखने से पहले ना डायग्राम देखेंगे. सेम पैकेज डिराइव्ड क्लास प्राइवेट will not executed, default will be printed and protected will be printed and public will be printed. Okay. So did you get that concept? Just 1 minute. आपको ऐसे प्रोग्राम रन करने पड़ेंगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं. ने क्या किया, फर्स्ट बेस क्लास रन किया, उसके सब प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. अब हमने डेराइव्ड क्लास किया, इन दैट वी गेट द एरर. एरर कैसे आया? सी आई विल शो यू. हियर आई विल मेक अ अनकमेंट. अब अनकमेंट करके इसको सेव करने की कॉपी कर कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, तो वी गेट द एरर. सी लाइन नंबर 5, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर SPBC, private will not allowed, and that's why here got the error. See, in derived class private will not accessible, private will not accessible. इसीलिए मैंने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया, कंपाइल किया और फिर इसे एग्जीक्यूट किया. देन इन दैट केस वी गेट द प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट एंड पब्लिक. ये समझते क्या? ये मुझे आपको समझ में आ रहा है कि प्रतीक, अदर स्टूडेंट्स, निकिता, नम्रता, श्रुति, डिड यू गेट दैट कंसेप्ट? अभी हमने ओनली 2 ही थिंक किए, बाकी और करने के हैं. डिड यू गेट दैट? इज इट आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट ट्रैक पे जा रहे हैं ना? नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है. क्विकली वी नीड टू डू द प्रैक्टिकल बिकॉज आपके लेक्चर्स भी है. सो विद इन 15 मिनट वी विल क्लोज दैट. So name independent class. So we'll write a code for independent class. Okay, so assume that this one is a one class is available. So we'll write a code for independent class. So here we'll write class same package independent class. Save that program. Paste it. Okay, so that's it. Here we directly write SPIC. We'll use a constructor over here. Yes, I will copy that same data also. So I will remove this. As a relationship create करना है हमें. Just 1 minute. As a relationship create करना है तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर सकते हो.
सो सी हैज रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली जो बेस क्लास है ना उसकी प्रॉपर्टी इसका ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करना पड़ता है। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ पैकेज, क्लास का नाम क्या है, सेम पैकेज बेस क्लास न्यू सेम पैकेज बेस क्लास, call this all method by using object dot as a relationship, मतलब उसकी प्रॉपर्टी तो इनहेरिट कर नहीं पा रहा हूं मैं, बट डायरेक्टली आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, उसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट कर that I will write a main method static, so इसे has a relationship किया जाता है। So in that case we directly create the object of the particular class, and by using this object we can access the property, because हमें तो एक्सेस नहीं बट इसे तो एक्सेस है ना। ये एसपी सेम पैकेज बेस क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर है उसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो सकते हैं, सो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट एंड वी कॉल देम, हियर विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ obj is equals to, that's it। अब ये भी कंस्ट्रक्टर है तो देयर इज नो नीड टू कॉल दैट मेथड। सो ओपन द टर्मिनल, type java c same package independent class dot java। In that case does we need to execute the spbc? No, we already executed that, so यहाँ नहीं जरूरत। So see we get the error, private has access। I will execute one more time, java same package independent class, private has access specifier। okay, so ये unprivate है इसकी वजह से ये accessible नहीं होगा। again what should do, will use comment, recompile it, and I'm trying to execute it। अभी execute, we get three output, protected, default, public। डायग्राम चेक करो एक बार, see same package independent class, private will not execute but default will be executed, protected will be executed and public will be executed। समझ में आ रहा है? yes, did you get that concept? so independent class के ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं, so याद रखना है आपको, और by using that object I am trying to access। so this one is has a relationship, इसे ना has a relationship कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये आगे आपको समझ में आएगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि when we use a private variable, when we use a protected variable, when we use a default variable, when we use a public variable। ओके, सो ये आई थिंक ये मैंने तीनों कवर कर लिया। नाउ वी नीड टू डू अदर पैकेज डिराइव्ड क्लास, अदर पैकेज इंडिपेंडेंट क्लास। सो अभी इंप्लीमेंट करना है। सो इसमें आओ टेस्ट प्राइवेट में, सॉरी एसपीबीपी से में, एंड हियर विल क्रिएट वन पैकेज पैक, जस्ट एक के अंदर जितने भी ऑलरेडी पैकेजेस है ना उसको डिलीट कर देता हूँ। आई डोंट वांट टू यूज देम। right now I don't have a package, so I will use package pack one। इतना ही करना है मुझे। जो मेरा डिराइव्ड क्लास था ना उसे मुझे क्रिएट करना है। so here I will write class, so before that I will import package, import pack one dot all। here I will write a class name, class other package derived class opdc, which will extend the property of same package base class, that means spvp। copy, save, पैक का नाम वही है क्या? एसपीपीपी से में जाके देखो, यस पैक वन इज देयर, यस एवरीथिंग इज देयर।
नाउ व्हाट शुड वी डू? डेटा क्लास की जो कॉपी है ना, ये हम इतने कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट row, change the replace the names. हमारा टाइम कम है, so here I will write other package derived class. कुछ भी चेंज नहीं करना है। Here I will remove this comment. Check what error we get. Other package derived class. Okay, so done that. We did the changes. Here we imported that package class OPDC, extend the same package base class, and here we OPDC. Okay, बाकी कुछ भी change नहीं. Now we need to compile this. आपको मैंने पहले बताया कंपाइल कैसे करना है। जावा सी सेम पैकेज बेस क्लास डॉट जावा, फाइल करो, डन। जावा सी हाइफन टी डायरेक्टरी डॉट spbc डॉट जावा directory. Now check out, does we have a directory? spc drive java folder c that one is created. Okay. Now similarly we'll execute java c other package derived class dot java. First of all we'll compile that. Error. Okay, so that means see we get the error. क्या क्या एरर आ रहे हैं अभी ये पढ़ने पड़ेंगे। Default will not accessible, protected will not accessible, public will not accessible. Check one by one. First bad file spdc sppc class file contains run pack data. Please remove the correctly subordinate subclass. Error kind font. Other package, other package extend the here import pack one dot all. Does we import the pack one dot all? Okay. OPDC extend the SPCC. यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। OPDC ओके। सो अदर पैकेज में क्या क्या रन नहीं होता है? अदर पैकेज में प्राइवेट एंड डिफॉल्ट विल नॉट एग्जीक्यूटेड। सो व्हाट शुड वी डू? प्राइवेट को हम कमेंट करते हैं एंड डिफॉल्ट चेक वन मोर टाइम। वी गेट still that file is not error can't file symbol can't file okay शायद से okay maybe ना ये 5 6 give me 1 minute. Okay. हाँ उसको बात नहीं मिल रहा है मतलब फाइल को बात फाइल बात नहीं मिल रहा है पैकेज का नाम देना पड़ेगा है so let's check out one more time. Now we get three errors back error detected error cannot access from outside package. Okay so just 1 minute, where is my base class? Class is not accessible. SPBC is not public.
ओके, यहाँ पब्लिक लिखा है बट फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कंपाइल करना पड़ेगा दैट क्लास। चेंजेस जब भी हम करते हैं तो एरर आता है, जावा सी सेम पैकेज बेस क्लास डॉट जावा, जावा सी now we'll run that java c other package derived a class dot java. Now it will compile. See, वो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में आ रहा था, सो मैंने चेंजेस किए बट उसे कंपाइल नहीं किया था। now we'll execute java c, okay, happen for directory, after that current directory and other package dc. Now we execute that java pack2 dot the name of class. Check does we create that pack2 ही create नहीं हुआ है, so that means ये work नहीं हुआ है। pack2 लिखा है क्या मैंने, लिखना पड़ेगा, where is that, yes I have imported that, यहाँ मैंने mention work java c, name of the program author package, ज्याला लेट होत असेल ते लेफ्ट करून टाका and they can watch the video later, so we'll continue the lecture. Okay, ये बार बार नहीं होता है फिर से, java c opdc dot java, I will create the directory that will be created, execute java, the name of directory will be pack2 dot, see, protected and public, protected and public. Okay, अब थोड़ा सा ना इसे चेंज करते हैं, we'll remove this comments, remove this comment, save, अभी सेव किया है मैंने बट इसे फिर से मुझे कंपाइल करना पड़ेगा, याद रखना है आपको। okay, so we need to compile these steps double, ये वापस करना पड़ेगा मुझे, java c pdc dot java, मुझे एरर दिखाना है इसकी वजह से, अभी प्रोग्राम तो रन हो गया, ओनली प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक विल बी एक्सेसिबल, बट क्यों, मैंने कमांड लिखा था इसलिए ये रन हुआ, अब मुझे एरर आएगा, java c opdc, see we get the error, private access specifier in ASP, private and protected, default is not public in ASPBC, cannot access from outside package, and private is also not accessible from outside package. See, यहाँ मैंने जो definition दिया था, other package derived class, private execute होता है क्या, नहीं, default execute होता है क्या, नहीं, protected होता है क्या, yes, public होता है क्या, yes, so यही इसका meaning है, so that's why here we wrote the comment, here also we wrote the comment default, अब ये run होगा, run कैसे करना है, java program other package derived class, we get the output. Okay, so like that we can execute our program. So last one is, लास्ट कौन सा है, अदर पैकेज इंडिपेंडेंट क्लास, तो हम बेस को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, बेस हमारा ठीक है, सेम पैकेज बेस क्लास, और पैक वन के अंदर ही उसे एज्यूम करेंगे एंड विल क्रिएट अदर क्लास। ओके, सो हियर आई विल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई विल क्रिएट पैकेज 3, पैकेज 3, पैकेज पैक 3 करेंगे इसे, package pack 3 and will import the class, import, what import,
क्या नाम है उसका, पैक वन। क्लास, क्लास का नाम क्या रहेगा, अदर पैकेज इंडिपेंडेंट क्लास, अदर पैकेज इंडिपेंडेंट क्लास। कॉपी सेव करके here pack 3 will be created, import pack 1 will be created, and now यहाँ इसके अंदर से ही इंडिपेंडेंट क्लास का जो है ना वही कोड हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, वक्त कम हो जाएगा। डिपेंडेंट क्लास है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा pack 1 कर रहा हूँ मैं। Relationship name of program will be other package independent class, pack 1 same package base class object is equals to pack 1 dot same package base class. Okay, here we'll write same package name, other package independent class. Okay, so object के तो name same है, so we did not worry about that. And here I will make a comment of this because it will be not executed, and I will make a comment of this also. Okay, so only this part will be executed. First of all, we'll run that, and later on we'll uncomment this. Here we'll create the object of the package independent class. Read the code. quickly से देखते हैं app1.sppbpc, right? Now everything is okay. Compile this. So अभी ये SPBC को कंपाइल करने की जरूरत है क्या? नहीं, बिकॉज अभी ही हमने किया था, बट इफ यू वांट टू क्रिएट देन यू कैन जावा सेम पैकेज बेस क्लास जावा, इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं किए तो एरर नहीं आएगा। डायरेक्टरी भी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो डायरेक्टरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट पैक 3 की डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट शुड वी डू, हियर विल रन जावा सी the name of program other package independent class dot java, इसे रन करना। Okay, see, now we'll create the directory java c hyphen d current directory, the name of program is opic, that means directory will be created, see, directory will be created. Now we'll execute that java, the name of program will be the pack 3 dot other package independent, we get the public 40, get the public 40. ओके, अभी ये कमेंट किया था तो कोई भी बोलेगा पब्लिक है इसकी वजह से आया, बाकी को कमेंट किया आपने। ओके, सो विल डू व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमूव प्राइवेट, लेटर आई विल रिमूव प्रोटेक्टेड, और इसको भी मैं रिमूव करूँ। नाउ बेस क्लास को तो चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी नीड टू चेंज द डिराइव्ड क्लास। ओके, सो हियर व्हाट शुड आई डू, आई विल कंपाइल जावा सी other package independent class, so we get the error. Error कहाँ आ रहे हैं, line number 8, line number 9, line number 10. So error, private has private access specifier, this variable has private access specifier, this variable has protected access specifier, and this variable is not public, that means it will be default. So तीनों के तीनों variable not accessible है, क्यों, बिकॉज ये क्या है, अदर पैकेज इंडिपेंडेंट क्लास है। क्या है, अदर पैकेज इंडिपेंडेंट क्लास, और अदर पैकेज में प्राइवेट विल नॉट एक्सेसिबल, डिफॉल्ट विल नॉट एक्सेसिबल, एंड प्रोटेक्टेड विल आल्सो नॉट एक्सेसिबल, ओनली पब्लिक विल बी एक्सेसिबल। ओके, सो मेरे पास ये प्रोग्राम था अभी, बट ये आपको नहीं समझ में आता। अब ये प्रोग्राम अगर देखते हो तो आपको ये समझ में आएगा। सी, इसका आउटपुट देखने के बाद में तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। That's why I have created a separate program. Okay, so इसके लिए मैंने separate program किया है ये, और ये भी समझ में आने जैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं समझ में आएगा, बट सी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हर बार रन होता है बेस क्लास का। सो फर्स्ट इट विल प्रिंट 1 10 20 30 40 सेम पैकेज एंड डिराइव्ड क्लास। सो ये फर्स्ट 4 लाइन्स है ना, ये बेस क्लास की है, एंड लेटर ऑन ओनली 20 30 40 विल बी एग्जीक्यूटेड।
अभी with respect to same package independent class, first four line for the default class, so it will be executed later on 20, 30, 40. In respect to the other package reload class, first four lines जो है ना base class की है तो इसलिए वो execute हुआ, later on just protected और public run हुआ, और independent class में भी first four line base class की है, last में only public. So हमने जो output लाया है ना तो only last line का है. So in that case last three line, in that case last three line, in that case last two line, in that case last one line. Okay, like that. अब हम यहाँ से performance. So hope so you will get the idea. Yes, I will close the video.